Hello students, this is physics session for class 10th. In the last session, I had discussed what is atmospheric refraction, and today I am going to discuss the natural phenomenon which is based on atmospheric refraction, and that is twinkling of a star. So, let us see how this natural phenomenon is based on atmospheric refraction. This is actual position of a star. And this is apparent position of a star. Actually, as we know, when we move toward the surface of Earth, the atmospheric density increases, so refractive index increases. Okay, so this is increasing refractive index. Okay. Actually, when starlight enters in the atmospheric layer, it continuously bends toward the normal before reaching to the observer's eye. Okay. So, and why this happens? This is because when the light travels through atmosphere, the atmospheric density increases, so refractive index increases, and due to this the light continuously bends toward the normal, and so the star is seen at different position than its actual position. So, this is apparent position of a star. Actually, the star is seen slightly at a higher position than its actual position. Moreover, the atmospheric density is not constant, and that is why the refractive index continuously changes, and due to this
the amount of light entering in our eye flickers, and sometimes it is seen brighter and sometimes it is seen fainter. So due to this, the star appears twinkling. ओके, जैसा कि हम जानते हैं, स्टार लाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ये नॉर्मल की तरफ कंटिन्यूअसली बेंड करती हुई चलती है, ठीक है, और तब जाकर ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है। तो क्यों बेंड कर रही नॉर्मल की तरफ? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जाता है और जिसकी वजह से स्टारलाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होती रहती है। इसकी वजह से स्टार थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है, जो कि इसकी एक्चुअल पोजीशन से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन कांस्टेंट नहीं रहती है, वेरिएबल होती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर की डेंसिटी चेंज होती रहती है। एंड ड्यू टू दिस, स्टार से चलने वाली जो लाइट है वो हमारी आईज में कभी ज़्यादा पड़ती है, कभी कम पड़ती है, ठीक है। इस वजह से अमाउंट ऑफ लाइट इन आवर आई फ्लिकर्स, और यही कॉज है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का, ठीक है। तो इस नेचुरल फेनोमेनन को हम कैसे नोट कर सकते हैं, कैसे नोट्स बना सकते हैं? लेट अस सी। It is based on atmospheric refraction. Okay, when starlight enters into the atmosphere, it continuously bend towards the normal, towards the normal. Okay, before reaching the observer's eyes. Okay, due to this, the apparent position of a star is different
than its actual position. Its actual position. Okay. So the star is seen slightly at higher position. Okay. Actually, this phenomenon is based on atmospheric refraction. When starlight enters into the atmosphere, it continuously bends toward the normal before reaching the observer's eye, and due to this, the star is seen at a different position than its actual position. So, the star is seen slightly at higher position. Okay. Now, you can take a screenshot of it. Now, remaining part of this explanation. Moreover, the physical condition of atmosphere is not constant. Due to this, the star fluctuates and the amount of light entering in our eyes flickers. So, sometimes the star looks brighter and at other time
or on the other time it looks fainter. This causes twinkling of star. Okay. Actually, physical conditions of the atmosphere is not constant. So, due to this, the refractive index continuously changes, and so the star fluctuates on its position, and due to this the amount of light entering in our eye flickers, and sometimes it is seen brighter and on the other time it is seen fainter. मीन्स कभी ये ज़्यादा तेज चमकता हुआ दिखाई पड़ता है और कभी कम चमकदार दिखाई पड़ता है. दिस कॉजेज ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार, और दिस इज द रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Now, another very important natural phenomenon which is based on atmospheric refraction is advance sunrise and delayed sunset. This natural phenomenon is also based on atmospheric refraction. So, let us see how atmospheric refraction is involved in advanced sunrise and delayed sunset, and what is the meaning of advanced sunrise and delayed sunset. This is earth and this is atmosphere surrounding the earth. Okay. This is horizon.
this is sun which is below the horizon. Okay. So when the sun is below the horizon, its light when enters in the atmosphere, it has to travel much long distance, and due to this atmospheric refraction, here is observer, this is apparent position of sun, and this is actual position. Okay. Actually, actual sunrise means when the sun actually crosses the horizon, it means actual sunrise. Okay. The sun appears 2 minutes before actual sunrise. Why this happens? Because when sunlight enters in the atmospheric layers, due to atmospheric refraction, it suffers atmospheric refraction and reaches to the observer's eye. So observer views the sun above the horizon, means the sun appears above the horizon. This is only because of atmospheric refraction. It takes nearly 2 minutes. So the sun is seen 2 minutes before actual sunrise. Actual sunrise means when the sun actually crosses the horizon. Okay. Similarly, at the time of sunset, it appears 2 minutes after actual sunset. Okay. So इसको आप इस तरह देख सकते हैं कि एक्चुअल सनराइज, एक्चुअली सन 2 मिनट पहले दिखाई पड़ जाता है, एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है. ठीक है. एक्चुअल सनराइज का मतलब ये हुआ कि जब सन हॉरिजन को क्रॉस करता है तो इसे हम एक्चुअल सनराइज कहते हैं. सो इट मीन्स एक्चुअल सनराइज मीन्स व्हेन द सन एक्चुअली क्रॉसेस द हॉरिजन. ठीक है. तो जब सन हॉरिजन से नीचे रहता है तो उस समय सनलाइट एटमॉस्फेयर लेयर से होते हुए ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है. ठीक है. तो ऑब्जर्वर को ये सन हॉरिजन के ऊपर दिखाई पड़ता है, तो इससे ये समझा जाता है कि द सन हैज़ अपीयर्ड या सनराइज हो चुका है, जबकि एक्चुअल में सनराइज नहीं हुआ है. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सन ऊपर दिखाई पड़ता है. ठीक है. ठीक इसी तरह सनसेट के समय जब सन हॉरिजन से नीचे चला जाता है, थोड़ा नीचे चला जाता है, तब तक सन दिखाई पड़ता है और 2 मिनट बाद तक ये दिखाई पड़ता है. एक्चुअल सनसेट होने के, एक्चुअल सनसेट मीन्स व्हेन द सन गोज बिलो द हॉरिजन, दिस इज एक्चुअल सनसेट. तो एक्चुअल सनसेट के बाद 2 मिनट तक सन दिखाई पड़ता है. ठीक है. और ये ओवरऑल एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है.
ठीक है। तो यहाँ पर हम एक दो बातों को बिल्कुल क्लियर कर दें। The sun appears two minutes before sunrise. Okay, before actual sunrise. Here actual sunrise means when the sun actually crosses the horizon. Okay. Likewise, the sun appears two minutes after actual sunset. Okay. This phenomenon is based on atmospheric refraction. Okay. Two things are very important in this explanation. Actual sunrise means when the sun actually crosses the horizon, it is actual sunrise. Okay. So sun is seen 2 minutes before actual sunrise due to atmospheric refraction. Likewise, the sun is seen 2 minutes after the actual sunset. Actual sunset means when the sun actually goes below the horizon. Actual sunset means when the sun goes below the horizon. Okay. This natural phenomenon is very important and this diagram is also very important. Okay. It is sometimes asked in board questions. So, be careful, revise it properly, advanced sunrise and delayed sunset. Now, the class is over and we will discuss some other natural phenomenon in the next class.
Thank you, students.